Morning students, welcome to GK class. Please take out your book Brain Quiz and open page number 9, chapter 5, Popular Nickname. Hope you all have opened to page number 9. So what we have in our chapter 5, Popular Nicknames. In it we have to fill the crisscross puzzle. Okay, how we have to fill it? In bottom we can see some hints are there with down and across. What we have to do in down? We have to fill the blocks with our answer from top to bottom. मतलब ऊपर से नीचे हम अपने ब्लॉक्स में आंसर भरेंगे. And in across we will fill our blocks from left to right. हम लेफ़्ट से राइट अपने आंसर को ब्लॉक्स में भरेंगे. ठीक है, और जैसे जैसे नंबर दिया हुआ है वो वाला आंसर हम उसी नंबर में भरेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ आवर फर्स्ट हिंट इन डाउन? पहले हम डाउन वाला भरेंगे. लैंड ऑफ फायर एंड आइस. विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ फायर एंड आइस? यस, आइसलैंड. We will fill the answer here. Iceland. I-C-E-L-A-N-D. Iceland. What is the next hint? The white rush. Which is known as the white rush? Yes, the number 3 is marked here, so we will write our answer over here. So answer is Belarus. What is the spelling of Belarus? B-E-L-A-R-U-S. Belarus. What is the next hint? Uncle Sam. So we will fill it in number 5 over here. So what is Uncle Sam? Tusa. What is the answer? Tusa. T-U-S-A. Tusa. Now next one, the red dragon. Yes, China. China is known as red dragon. So we will fill the answer over here. C-H-I-N-A. China. So the last one in down, land of smiles. Which is known as land of smiles? Yes, Thailand. T-H-A-I-L-A-N-D. Thailand. So we are completed with down. Now we will be doing across, means we will be filling the blocks from left to right. Okay students, so let's start. First, second number, land of milk and honey. Which is known as land of milk and honey? Can anyone answer? Yes, Switzerland. We will fill over here. S-W-I-T-Z-E-R-L-A-N-D. Switzerland. So next one, the land of poets. Which is known as the land of poets? We will fill it over here. Child. C-H-I-L-E. Child. Okay, hope you all have written the answer. So now the next one, seventh one, India's teardrop. Which or what is known as India's teardrop? Yes, Sri Lanka. We will fill it over here. S-R-I-L-A-N-K-A. Sri Lanka. Now the ninth one, land of rising sun. Which is known as the land of rising sun? Can anybody tell me? Yes, it's Japan. J-A-P-A-N. Japan. We will fill it over here. Japan. Now the next and the last one, the boot. Which is known as the boot? The answer is Italy. I-T-A-L-Y. Italy. Hope all of you have written the answer. Now we will move to the next chapter. So
we are on page number 10, chapter 6. I will remember. What we have to do in this? We have to match the column A with the column B. In column A, we are given the dates, and in column B, we are given which day is celebrated on that date. So let's start. Yes, the first one, फर्स्ट संडे ऑफ मे के पहले संडे को कौन सा दिन बनाया जाता है? द आंसर इज डी, वर्ल्ड लाफ्टर डे. ओके, होप यू हैव फिल्ड इट. नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ अप्रैल. व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल? यस, द आंसर इज अप्रैल फूल्स डे. जी, April Fool's Day. Third, 28th of July. What is celebrated on 28th of July? Yes, it's World Hepatitis Day. Option A, World Hepatitis Day. Next, 13th November. So what is celebrated on 13th of November? Yes, World Kindness Day. Second one, B, World Kindness Day. Option B. B for ball. Next, 5th, 1st December. So what is celebrated on 1st December? Yes, World AIDS Day. Option H. H for hen. H, World AIDS Day. 6th, 22 April. So what is celebrated on 22nd of April every year? Yes, option C, Earth Day. Option C, Earth Day. 7th, 10th December. So what is celebrated on 10th of December every year? Yes, option E, E for elephant, Human Rights Day. Option E, Human Rights Day. Last one, 21st of September. So which day is celebrated on 21st of September? Yes, answer is International Day of Peace. Option F, F for fan, fan माने पंखा. International Day of Peace. So now we will move on to page number 11. Okay, so please take out your page number 11. So hopefully you all have opened to page number 11, chapter 7, My Duty Begins. So what we have to do in this? We have to solve the quick quiz in it with the help of the images given beside the fill in the blanks. Okay, so let's start. So the first question is, who helped to clean the air we breathe? हमें हमारी हवा को साफ करने में कौन हेल्प करता है? ट्रीज, पेड़. ट्रीज, TREES, trees. Hopefully you all have written. So next one, the second one, we must stop using these to save our environment from this degradation. What are these? So answer is poly bags. POLY, poly, BAGS, bags, poly bags. क्या होते हैं poly bags? जो हम पॉलीथीन लेके आते हैं ना दुकानों से, सामान लेके आते हैं, उसमें प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पोली बैग्स. तो हमें उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन. व्हाट इज़ द डेंस मिक्स ऑफ स्मोक एंड फॉग दैट कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज कॉल्ड? स्मोक और फॉग के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं जो कि हमें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत देती है? क्या है उसका आंसर? स्मॉग. SMOG, स्मॉग. SMOG, स्मॉग. नेक्स्ट, दिस इज द रीज़न फॉर मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. आइडेंटिफाई इट.
जो हमारी बर्फ़ के देश हैं जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक, उसमें जो भी हमारी बर्फ़ है वो आजकल क्यों पिघल रही है, किस कारण से पिघल रही है? तो क्या है उसका आंसर? ग्लोबल वार्मिंग। GLOBAL ग्लोबल, WARMING वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। Now next one and the last one of this chapter, which is the annual tree plantation festival celebrated in India that started in 1950 under the pioneer of K.M. मुंशी। इंडिया में कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि पेड़ों को लगाने के लिए मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में के.एम. मुंशी के द्वारा? तो क्या है आंसर? वन महोत्सव। VAN, वन, MAHOTSAV, महोत्सव, वन महोत्सव। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज राइट ए प्लेज अबाउट प्रोटेक्टिंग दिस ब्यूटीफुल अर्थ। हमें एक प्लेज लिखनी है कि कैसे हम अपनी दुनिया को या धरती को बचा सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ये प्लेज लिखी हुई है, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप अपनी कोई खुद की बनाई हुई प्लेज भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है? आई डैश, डैश में हम अपना नाम लिखेंगे। लाइक माई नेम इज सौरभ, तो आई विल राइट आई सौरभ, कोमा, pledge to help the environment and to save something wild. I promise to turn off the lights in empty rooms at home, comma, and ask my teachers to do the same at school. तो ये प्लेज मैंने लिखी है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आप अपनी खुद की प्लेज भी लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टुडे वी विल study this much. See you in the next class. Bye.